Okay. Uh, Topic for today is Gyan Yog. Student, just listen. Topic for today is Gyan Yog. And under that, four stages of knowledge. That is Vivek, Vairagya, Sat Sampati, and Mumukshutva. Remember, Gyan Yog, four stages of knowledge. Number one is Vivek, that is discrimination. Second one is Vairagya, renunciation. Third is Sat Sampati, the six treasures. And the fourth one is Mumukshutva, constant striving for God. Now, in short, I'll describe what is Vivek. Vivek means discriminating between the real and the unreal. Discriminating between the real and unreal, the permanent and temporary, the self and non-self. Second, vairagya, which means cultivating an attitude of dispassion. Cultivating an attitude of dispassion and non-attachment towards sensory pleasure and pain, and remaining engaged in life without craving. The third one is Sat Sampat. The sixth virtue and mental practices stabilizes the mind and emotion so one can better discern what is real, eternal, and the self. The fourth one is mumukshutva, an intense desire for liberation from suffering that commits one to the path. Now, what is Gyan? Our main topic is Gyan, Jnana Yoga. You can also spell it as Jnana Yoga, Jnana, Jnana Yoga. Now, what is Gyan Yoga? Jnana Yoga is self inquiry. Jnana means wisdom or knowledge. Gyan Yoga is considered the most difficult of the four main paths of yoga. Gyan Yoga is considered the most difficult of the four main paths of yoga, requiring great strength of will and intellect. Means Gyan Yoga, Atma Pushtaj. ज्ञान योग आत्म पूछताछ ज्ञान के योग के चार मुख्य मार्गों में से सबसे कठिन माना जाता है। ज्ञान योग को चार मुख्य मार्गों में से सबसे कठिन माना जाता है, जिसके लिए इच्छा और बुद्धि की महान शक्ति की आवश्यकता है। नाउ, ज्ञान योग or Gyan Yoga is essentially a deep inquiry to the nature of the self. The intention when practicing Gyan Yoga is to use the mind to understand and uncover the truth behind the mind. Means ज्ञान योग अनिवार्य रूप से स्वयं की प्रकृति की गहरी जांच है। ज्ञान योग का अभ्यास करने का उद्देश्य मन के पीछे की सच्चाई को समझने और उजागर करने के लिए मन का उपयोग करना है। Now, Gyan Yoga is the direct path of self-investigation. Gyan Yoga is the direct path of uh, self-investigation. ज्ञान योग आत्म अन्वेषण का प्रत्यक्ष मार्ग है। ज्ञान योग या ज्ञाना means knowledge. Gyan means you all know means knowledge. Gyan. Gyan Yoga is the path where reality is discovered through insight. Gyan Yoga is the path where reality is discovered through insight, practice and knowledge. ज्ञान का अर्थ है knowledge. ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग वह मार्ग है जहाँ अंत दृष्टि, अभ्यास और ज्ञान के माध्यम से वास्तविकता की खोज की जाती है। Now, Jnana means or Jnana means in Sanskrit stands for knowledge or wisdom. Gyan Yoga is the path of attaining knowledge
of the true nature of reality through the practice of meditation, self inquiry, and contemplation. Gyan Yoga can be defined as the awareness of absolute consciousness and is a comprehensive practice of self study. Now, ज्ञान योग एक संस्कृत शब्द है। ज्ञान योग ध्यान, आत्म जांच और चिंतन के अभ्यास के माध्यम से वास्तविकता और वास्तविक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। ज्ञान योग को पूर्ण चेतना की जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और यह स्वाध्याय का एक व्यापक अभ्यास है। Now, in ज्ञान योग, the mind is used to inquire into its own nature and to transcend the mind identification with its thoughts and ego. Now, what are the fundamental goal of Gyan Yoga? The fundamental goal of Gyan Yoga is to become liberated from the illusionary world of Maya, self limiting thoughts and perception, and to achieve the union of the inner self, Atman, with the oneness of all life, Brahma. This is achieved by steadfastly practicing the mental techniques of self questioning, reflection, and conscious illumination that are defined in the four pillars of knowledge. Now, what are the four pillars of knowledge? That is Vivek, Vairagya, Sat Sampat, and Mumukshutva. Now, ज्ञान योग में मन का उपयोग अपने स्वयं की प्रकृति के बारे में पूछताछ करने और अपने विचारों और अहंकार के साथ मन की पहचान को पार करने के लिए किया जाता है। ज्ञान योग का मूल लक्ष्य माया की भ्रमपूर्ण दुनिया से मुक्त होना और सभी जीवन की एकता के साथ आंतरिक स्व के मिलन को प्राप्त करना है। यह ज्ञान के चार स्तंभों में परिभाषित आत्म प्रश्न, प्रतिबिंब और सचेत रोशनी की मानसिक तकनीकों को लगातार अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता है। Now, we'll look what are the four stages or four paths of Gyan Yoga. Number one is Vivek. Keep in mind, Vivek means discrimination. Now, what is Vivek? Vivek is intellect. Vivek is intellect. It is the discrimination between the real and the real, unreal, between the permanent and the temporary, between the self and non-self. Means what is real, you will get to know what is real, what is unreal, what is permanent in your life, what is temporary in your life, between the self and the non-self. Means विवेक बुद्धि है या वास्तविक और अवास्तविक के बीच, स्थायी और अस्थायी के बीच, स्वयं और गैर स्वयं के बीच भेदभाव है. No. One should continuously and deliberately make an intellectual effort to distinguish between the self and non-self, real and unreal, eternal and temporary, pleasure and bliss. व्यक्ति को निरंतर और जानबूझकर स्वयं और गैर, स्वयं और वास्तविक और अस्थायी के बीच अंतर करने का बौद्धिक प्रयास करना है. Now, Viveka comes to a man only by the grace of God. विवेक कब आता है? विवेक comes to a man only by the grace of God. The grace will come after one has done a continuous and selfless service in his past, including previous birth, with the feeling that all the work that he is doing is the work of Lord, which means विवेक भगवान की कृपा से ही मनुष्य के पास आता है. कृपा तब आएगी जब उसने पिछले जन्म सहित अपने अतीत में एक निरंतर और निस्वार्थ सेवा की है. विवेक कब आएगी? विवेक तब आएगी जब उसने पिछले जन्म सहित अपने अतीत में एक निरंतर और निस्वार्थ सेवा की है.
इस भावना के साथ कि वह जो भी काम कर रहा है वह भगवान का काम है। Now, you can also say it is a spiritual practice of realizing the truth and the soul. Vivek is the purest form of knowledge. Vivek, it is the first stage of Gyan Yoga and is the purest form of knowledge. It can also be described as the supreme authority of our conscience. You can also say it as, described it as the supreme authority of our conscience. Our conscience tell us what is right, what is wrong. Mostly we know very well that we should do, we know very well what we should do. Now, however, our egoistic desire generally show themselves as stronger and drown the voice of conscience within us. Now, विवेक ज्ञान का सबसे विवेक ज्ञान का सबसे शुद्ध रूप है। इससे हमारी अंतरात्मा का सर्वोच्च अधिकार भी कहा जा सकता है, द सुप्रीम अथॉरिटी। हमारा विवेक हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। ज्यादातर हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अहंकारी इच्छाएं आमतौर पर खुद को मजबूत दिखाती है और हमारे भीतर अंतरात्मा की आवाज को डुबो देती है। Now, Vivek, it's the Sanskrit word. Vivek is a Sanskrit word which means discrimination and discernment, means bhedbhav or Vivek. Discrimination means bhedbhav and discernment is also known as Vivek. Now, the second stage or the second path of Gyan Yoga is Vairagya. The second one, the second stage of knowledge is Vairagya, renunciation. Now, Vairagya is a Sanskrit word that translates as detachment or dispassion. Vairagya is a Sanskrit word that translates as detachment or dispassion. Means वैराग्य एक संस्कृत शब्द है। वैराग्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद वैराग्य के रूप में किया जा सकता है। Detachment and dispassion means vairagya. Now, in Patanjali Yoga Sutra, the essence of vairagya is described as dispassion is the conscious mastery of the control of desire for objects seen, perceived or heard. पतंजलि के योग सूत्र में वैराग्य के स्तार का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वैराग्य देखी या सुनी गई वस्तुओं की इच्छा के नियंत्रण की सचेत महारत है। Vairagya means to liberate oneself. Vairagya means to liberate oneself. Liberate means mukti pana. Vairagya means to liberate oneself inwardly from any desire for earthly pleasure or possession. वैराग्य का अर्थ है अपने आप को सांसारिक सुख या संपत्ति की किसी भी इच्छा से आंतरिक रूप से मुक्त करना। Now, true vairagya means detachment or letting go of everything. What is true vairagya? True vairagya means detachment or letting go of everything that belongs to the materialistic world, including attachment to material things, emotions, thought, ideas, belief, etc. Essentially, vairagya is a deeper, conscious, and more subtle practice of not giving a damn. Means सच्चा वैराग्य का अर्थ है वैराग्य या भौतिकवादी दुनिया से संबंधित हर वो चीज को छोड़ देना जिसमें भौतिक चीजों, भावनाओं, विचारों, विश्वासों आदि के प्रति लगाव शामिल है। अनिवार्य रूप से वैराग्य एक गहरी, सचेत
और अधिक सूक्ष्म साधना है। No, vairagya is dispassion for the pleasure of this world. The view that everything in this world is temporary. The view that everything in this world is temporary and unreal, which results in indifference towards enjoyment of this world. यह विचार कि इस संसार में सब कुछ अस्थायी और अवास्तविक है। अवास्तविक है, इस संसार के आनंद के प्रति उदासीनता का परिणाम है। Now, vairagya means does not mean vairagya does not mean abandoning one as social duties and responsibilities of life. Vairagya does not mean abandoning one as social duties and responsibilities of life. वैराग्य का अर्थ सामाजिक कर्तव्य और जीवन की जिम्मेदारियों के रूप में त्यागना नहीं है। It does not mean to live in a solitary cave of the Himalaya or in a forest. इसका मतलब यह भी नहीं है कि हिमालय के एकांत गुफा या जंगल में रहना। It is a mental attachment from the worldly object. यह सांसारिक वस्तुओं से मानसिक लगाव है। One may discharge all duties but still with detachment. He may be a common man with family, yet he may have the mental detachment from the materialistic world. यह सांसारिक वस्तुओं से मानसिक लगाव है। कोई भी कर्तव्य को निर्वहन कर सकता है, लेकिन फिर भी वैराग्य के साथ। वह परिवार वाला एक सामान्य व्यक्ति तो हो सकता है, फिर भी भौतिकवादी दुनिया से उसका मानसिक अलगाव हो सकता है। Now, a consistent practice of vairagya reduces emotional reactivity and increases patience. It increases acceptance, forgiveness, non-judgment, contentment, and self-worth. This, in return or in turn, improves your relationship with others. You may also find that with less attachment, you will see an improvement in your overall energy, vitality, and health. वैराग्य का लगातार अभ्यास भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करता है और धैर्य को बढ़ाता है। यह स्वीकृति, क्षमा, गैर निर्णय, संतोष और आत्म मूल्य को बढ़ाता है। यह बदले में दूसरों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाता है। आप यह भी पा सकते हैं कि कम लगाव देखेंगे, आप अपनी समग्र ऊर्जा, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे। Now student, just keep in mind, under Gyan Yog or the 4 stages of knowledge, first was Vivek, which you have already heard. Second one was Vairagya. I just completed Vairagya. The third point is Shat Sampati. The third one is Shat Sampati. Now, under Shat Sampati, there are 6 treasures. Keep in mind, under Shat Sampati, there are 6 treasures, or you can say 6 points under Shat Sampati. Number 1 is Sama. Second one is Dhamma. Third one is Shraddha. Fourth is Titiksha. Fifth is Uparati. And the sixth one is Samadhana. Are you getting my point? Please just raise your hand. Anyone? Okay, thank you. I'll repeat again. And the topic for today is Gyan Yoga. Under Gyan Yoga, there are 4 stages. Number 1 is Vivek. Second is Vairagya. Third is Sat Sampati. And the fourth one is Mumukshutva. Now I'll study
or I'll tell about Shat Sampati. And under Shat Sampati, there are 6 point or 6 treasure. That is, number 1 is Sham. Second one is Dam. Third one is Shraddha. Fourth is Titiksha. Fifth one is Uparati. And the sixth one, the last one is Samadhana. Just keep in mind the sixth point. Now, uh, the first one is Sham. Now, what is Shad Sampati? The Sat Sampati, the yogi believe we come into this life with 6 hidden treasure. They are designed to create a framework that guide us beyond delusion and misunderstanding. It is these delusions that form the very basis of our suffering, attachment, and sadness, becoming the seed that germinates into fear. They help us to see that life happened for us and that trust and inner knowing take us to the nucleus of the teaching each and every time. It is only through consistent dedication to the practice of yoga that we can purify the mind, intellect, and consciousness and ego. When this purification occurs, we experience a sense of transformation. We experience a sense of transformation that give rise to Sat Sampati, the 6 inner treasures. What was once dormant and unconscious now become conscious and give rise to the quality that show us who we truly are and what we are really capable of. Now, योगी मानते हैं कि हम इस जीवन में 6 छिपे हुए खजानों के साथ आते हैं, 6 हिडन ट्रेजर। वे एक ऐसा ढांचा बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो हमें भ्रम और गलतफहमी से परे मार्गदर्शन कराता है। यही वह भ्रम है जो हमारे दुख, आसक्ति और दुख के बीच बनाने का आधार बनते हैं, जो भय में अंकुरित होते हैं। वे हमें यह देखने में मदद करते हैं कि जीवन हमारे लिए होता है और यह यह विश्वास और आंतरिक ज्ञान हमें हर बार शिक्षण के केंद्र में ले जाता है। योग के अभ्यास के प्रति निरंतर समर्पण के माध्यम से ही हम मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार को शुद्ध कर सकते हैं। जब यह शुद्धि होती है तो हमें परिवर्तन की भावना का अनुभव करते हैं। सत संपत्ति 6 आंतरिक खजानों को उत्पन्न करता है, लेकिन कभी निष्क्रिय था और अचेतन अब सचेत हो जाता है और उन गुणों को जन्म देता है जो हमें दिखाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। Now, the very first point under Shat Sampati is Sam. The wise word, quiet the mind and the soul will speak. Someone audio is on. Please mute your mic. The first point under Sat Sampati is Sam. The wise word, quiet the mind and the soul will speak. बुद्धिमान शब्द है, मन शांत और आत्मा बोलेगा. Now, Shama refers to a state of unwavering inner calmness, a silence that is undisturbed by
external experience. When we experience withdrawal of the senses, pratyahara, we can exist in the Western world and meet its demand without losing our sense of focus on the true being that we are, the inner self. Means समा अटल आंतरिक शांति की स्थिति को संदर्भित करता है, एक मौन जो बाहरी अनुभवों से अविचलित है। जब हम इंद्रियों को वापस लेने का अनुभव करते हैं, प्रत्याहार, हम पश्चिमी दुनिया में मौजूद हो सकते हैं और सच्चे अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी भावना को खोए बिना इसकी मांगों को पूरा कर सकते हैं कि हम आंतरिक स्वयं हैं। Now, in other term, shama means to have that inner tranquility of the mind. The word shanti, which means peace, comes from the word shama. This is a very important quality. It is wealth that one should strive to acquire. When the mind is not at a peace, your intellect becomes dull and hazy, and you're not able to listen or understand what someone else is saying. To sharpen the intellect, you need to calm the mind. Now, सामा का अर्थ है मन की उस आंतरिक शांति का होना। शांति शब्द की उत्पत्ति समा शब्द से हुई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह धन है जिसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब मन शांत नहीं होता है तो आपकी बुद्धि सुस्त और धुंधली हो जाती है और आप कोई और क्या कह रहा है आपसे उसे सुनने या समझने में सक्षम नहीं होते हैं। बुद्धि को तेज करने के लिए सबसे पहले मन को शांत करने की जरूरत है। Now, please mute your mic. Students, am I audible? जिसके भी माइक ओपन है प्लीज इसको ऑफ कर दे। Now the second point under Sat Sampati is Dham. Dham refers to the ability for self-control, more specifically student, just give me a second. जल्दी काम करके लॉक करके चले जाते हैं। Now, the second point under Sat Sampati is Dham. Dham refers to the ability of self-control, more specifically, control of the senses, thought, and emotions. When we make decisions and process our experience from an integrated space, we are more likely to make more aligned, thoughtful, and considered choices that comes from a reliable space, which means काम आत्मनियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। अधिक विशेष रूप से इंद्रियों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण। जब हम एक एकीकृत स्थान से निर्णय लेते हैं और अपने अनुभवों को संसाधित करते हैं तो हमारे द्वारा एक विश्वसनीय स्थान
से आने वाले अधिक सेरांकित, विचारशील और सुविचारित विकल्प बनाने की संभावना अधिक होती है. Now, in other term, the second kind of wealth is dam. The second kind of wealth is dam, which means having a say over your own senses, means your self-control. My God. Student, are you getting disturbed? Please raise your hand. Now, the example for dam is many times, just listen the example. Many times when people travel overnight, many times when people travel, okay, example, many times when people travel overnight in a luxury bus or airplane to attend some important work in the morning, there is a movie being there is a movie being played during the journey in a bus or in an airplane. Now, though they want to sleep, they continue watching the movie. A moment comes when they say to themselves, "Oh, I have already seen this movie before. It's the same rubbish. What is there to watch again?" Yet the eyes say, "No, I want to watch and see what is happening." Your eyes do not agree with you. Your intellect says one thing, but your eyes disobey and follow something else. To have Dhamma means to have a perfect alignment between your mind and your senses, means your self control. Now, Titiksha. Sorry. Third one is Shraddha. 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 Shraddha means to adore something that you don't completely know. Shraddha. This is a common word, as you all know. I mean, everyone knows Shraddha. Shraddha means to adore something that you do not completely know, you do not fully know it, yet you feel there is something wonderful about it and have a deep interest to know more about it. You do not need to have faith in what you already know. Faith is always in something that you do not know, yet to feel a sense of connectivity to that unknown. मीन्स श्रद्धा का अर्थ है किसी ऐसी चीज की पूजा करना जिसे आप पूरी तरह से नहीं जानते हो. आप इसे पूरे तरह से नहीं जानते हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अद्भुत है, इसके बारे में और जानने की गहरी दिलचस्पी आप दिखाते हैं. जो आप पहले से जानते हैं उस पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है. विश्वास हमेशा उस चीज में होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, फिर भी आप उस अज्ञात से जुड़ाव महसूस करते हैं. Now, without Shraddha, nothing can move in life. This is the example for Shraddha, the third point. Without Shraddha, nothing can move in life. Your doctor tells you to take a certain medicine. You take the medicine because you have faith in the doctor. If you do not have faith in the doctor, you will not touch the medicine. So our life run in faith, which means जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका इलाज करता है और आपको एक मेडिसिन आपको बोला जाता है, प्रेस्क्राइब करता है कि आप ये मेडिसिन लो. बिकॉज
only you have faith in the doctor and you have faith in that medicine, you believe doctor and you take that medicine. So our life runs on faith. The second example is the city as electricity board gives you electricity. Having faith that you will pay the bill at the end of the month means city electricity board को यह विश्वास है कि वो आपको लाइट प्रोवाइड करता है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, एंड दे नो during the end of month you will pay the electricity bill. This is called Shraddha, the belief, the faith you have in others. Now, the fourth point is Titiksha. Titiksha relates to the way in which we, as yogi, use our life experience or life lessons as opportunities to build our inner resilience, strength, and courage, rather than see experiences happening to us. Now, तितिक्षा उन तरीकों से संबंधित है जिनमें हम योगी के रूप में अपने जीवन के अनुभवों और जीवन के सबक को आंतरिक लचीलापन, शक्ति और साहस बनाने के लिए के अवसरों के रूप में उपयोग करते हैं. 1 मिनट. उपयोग करते हैं. अनुभवों को अपने साथ घटित होते देखने के बजाय हम उन्हें अपने लिए घटित होते हुए देखते हैं. इस ज्ञान और विश्वास के साथ हम आंतरिक लचीलापन बनाते हैं क्योंकि हम जीवन के अपरिहार्य चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं. Now, in other terms, Titiksha. Titiksha means forbearance. तितिक्षा का मतलब है सहनशीलता. Forbearance. It means the ability to endure even that which is not of your liking. Now, it is not possible that everything will go as per your liking. If you tend to lose your calm and presence of mind when something do not happen as per your expectation, then that shows a lack of titiksha. Means तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता, अर्थात जो आपको पसंद नहीं है उसे भी सहन करने की क्षमता. अब यह संभव नहीं है कि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो. यदि आपकी अपेक्षाओं के अनुसार कुछ नहीं होता है, आप अपनी शांति और मन की उपस्थिति खो देते हैं. तो यह तितिक्षा की बनावट की कमी को दर्शाता है. Now, having titiksha means to be patient and to have forbearance, to maintain a balance and be able to bear it when this undesired situation arise in life. That is a sign of having titiksha. धैर्य रखने और सहनशीलता रखने के लिए तितिक्षा होना जीवन में अनिवार्य है. अनचाही स्थिति उत्पन्न होने पर संतुलन बनाए रखना और उसे सहन करने में सक्षम होना तितिक्षा होने का संकेत है. Suppose someone is very unpleasant to you, and if you lack titiksha, then it rattles your mind and throws you off balance. With titiksha, you can move on and keep the balance. मान लीजिए कोई आपके लिए बहुत अप्रिय है. यदि आपके पास तितिक्षा का अभाव है, तो आपके दिमाग को झकझोर देता है और आपको संतुलन से बाहर कर देता है. तितिक्षा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और संतुलन बनाए रख सकते हैं. Now, the fourth one is Uparati. Uparati means enjoying anything that you do. Uparati means enjoying anything that you do, even if it is a small thing. It means to have a sense of enthusiasm in whatever you do. उपरति का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद लेना, भले ही वह एक छोटी सी बात हो. इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्साह की भावना रखना. जब उपरति का अभाव होता है तो
ना मायूसी, ना रुचि, ना उत्साह होता है। अगर आप में उपरति की कमी है तो आप कुछ भी करना पसंद नहीं करते हैं। When there is a lack of uparati, then there is dejectedness. No interest, no enthusiasm, you do not like doing anything if you lack uparati. One who does not have enthusiasm cannot create or invent anything new. Uparati means to do everything wholeheartedly, finding joy and taking total interest in it. जिसके पास उत्साह नहीं है, वह ना तो कुछ नया बना सकता है, नया कुछ इन्वेंट भी नहीं कर सकता, ना कुछ आविष्कार कर सकता है। उपरति का मतलब है हर काम को पूरे दिल से करना और उसमें पूरी तरह से दिलचस्पी लेना। Uh, now, the last point is samdhana. Samdhana means contentment. This is also a gift, a true wealth. A person who is content exuberates a certain sense of joy from deep within. He exudes certain positive vibration that everyone else would love to have. समाधान का अर्थ है संतोष। यह भी एक उपहार है, एक सच्चा धन है। एक व्यक्ति जो संतुष्ट है वह भीतर गहरे से आनंद की एक निधित भावना को बढ़ाता है। वह कुछ सकारात्मक संपादन करता है जो बाकी सभी को पसंद आएगा। Now, when you look at every invention, when you look at every invention on this planet with a keen sense of observation, you will find that it has come when people have gotten over their restlessness, desperation, and dejection. It has it has come when people have gotten their restlessness, desperation, and dejection. It has happened when they arrived at a point of breakdown and relaxed. In that moment of total relaxation and contentment, creativity came to them. सूक्ष्म अवलोकन की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह तब आया है जब लोगों ने अपनी बेचैनी, हताशा और निराशा पर काबू पा लिया है। यह तब हुआ है जब वे टूटने और आराम के बिंदु पर पहुंचे, पूर्ण विश्राम और संतोष के उस क्षण में उनमें रचनात्मक आ गई। Uh, in other terms, you can also say samdhana or total concentration and focus of the mind. Samdhana, yeah, samadhan is the final of the sixth treasure and concern of our ability to remain committed and focused on a goal. When we do this, we move away from the constant worldly distraction of our senses and have the capacity to stay focused on the discovery and evolution of our soul purpose. We can connect with our purpose by taking the time to withdraw from life as distraction and venture into our inner silence within. This in turn gives shape for the answer to rise. समाधान 6 खजानों में से अंतिम है और हमारे लक्ष्यों पर प्रतिबद्ध है और केंद्रित रहने की हमारी क्षमता से संबंधित है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों के निरंतर सांसारिक विकर्षणों से दूर चले जाते हैं और हमारे आत्म उद्देश्य की खोज और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। हम जीवन के विकर्षणों से पीछे हटने और आंतरिक मौन में उद्यम करने के लिए समय निकालकर अपने उद्देश्य से जुड़ सकते हैं। ये बदले में उत्तर उठने के लिए जगह देती है। Now the last point under Sat Sampat under Gyan Yoga is Mumukshutva. The last point, Mumukshutva. Mumukshutva
means the presence of an intense desire for self-realization. Mumukshutva is an intense desire for liberation from suffering of the world. मुमुक्षुत्व भगवान के लिए निरंतर प्रयास है. The most important attribute to realize God is mumukshutva, the presence of an intense desire for self-realization. मुमुक्षुत्व संसार के कष्टों से मुक्ति का तीव्र इच्छा है. The intense yearning to attain liberation is called mumukshutva. Mumukshutva is uh, mumukshutva is awareness about the ultimate goal of life, that is to become divine. Mumukshutva is the burning desire in the heart to realize God, the realization of our true self. Self realization is the experience that we are not separate from God but are one with God and all of life. It becomes clear that whatever harms other ultimately harms us. So finally, to understand and obey the universal precept of ahimsa and non-violence. In this way, the path of Gyan Yoga unites with the principle of Bhakti Yoga, Karma Yoga and Raj Yoga. मुमुक्षुत्व जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में जागरूकता है जो दिव्य बनना है. मुमुक्षुत्व हृदय में ईश्वर को जानने का तीव्र इच्छा है. आत्म साक्षात्कार यह अनुभव है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि ईश्वर और पूरे जीवन के साथ एक है. जब यह बोध होता है तो बुद्धि की सीमाएं खुल जाती हैं और निरपेक्ष हो जाती है. Now, student, I'll just give one example. Just listen carefully what mumukshutva is through the example. Now, the example for mumukshutva is, to make this point more clear, example, once a disciple asked, under mumukshutva, once a disciple asked Swami Ramakrishna Paramahans, what is the most important attribute to realize God? Swami replied with simplicity, mumukshutva, intense desire for self-realization. The disciple asked, can you please explain what is mumukshutva? Swami said, I will tell you when the time comes. A few days passed, but Swami did not speak a single word about the topic to the disciple. One day, both of them set out for a dip in river Ganga. No sooner had the disciple proceeded for the dip and put his head inside the water, Swami pressed it inside without letting him take the head out of the water. The disciple tried to take his neck out to breathe, but Swami would not let him do so. Within a few moments, the disciple felt that he would drown and die in the water. Just then, Swami relaxed his grip on the disciple's head. As soon as the disciple took his head out of the water, he said to Swami, had I stayed in water for one more second, I would have died. The Swami replied smilingly, I was explaining you the meaning of mumukshutva. Surprised, the disciple asked how. Swami replied, the longing that you experience inside the water to breathe, when you develop that kind of longing to realize God, that is known as mumukshutva. I'll explain it in Hindi. एक बार एक शिष्य ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भगवान को महसूस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? स्वामी ने सरलता से उत्तर दिया, मुमुक्षुत्व. शिष्य ने पूछा, क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि मुमुक्षुत्व क्या है? स्वामी ने कहा, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा. कुछ दिन बीत गए, लेकिन स्वामी ने इस विषय के बारे में शिष्य से एक शब्द भी नहीं कहा. एक दिन दोनों गंगा नदी में डुबकी लगाने निकले. जैसे ही शिष्य ने डुबकी के लिए आगे बढ़ा और उसने अपना सिर पानी के अंदर डाला, स्वामी ने सिर को पानी से बाहर निकाले बिना उसे अंदर दबा दिया. शिष्य ने सांस लेने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन
स्वामी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। कुछ ही पलों में शिष्य को लगा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगा। तभी स्वामी ने शिष्य के सिर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही शिष्य ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, उसने कहा, अगर मैं पानी में 1 सेकंड और रहता तो मैं मर जाता। स्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आपको मुमुक्षुत्व का अर्थ समझा रहा था। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? स्वामी ने उत्तर दिया, सांस लेने के लिए आपने पानी के अंदर जिस लालसा का अनुभव किया, सांस लेने के लिए आपने पानी के अंदर जिस लालसा का अनुभव किया, जब आप ईश्वर को महसूस करने के लिए उसी तरह की लालसा विकसित करते हैं, जब आप ईश्वर को पाने के लिए या महसूस करने के लिए उसी तरह की लालसा को विकसित करते हैं, जिसे मुमुक्षुत्व के नाम से जाना जाता है। Now with this, I'll end my topic. Student, you may log out. Student, you may log out.